Korean military on our territory, it's rather a question for our military, for our defense ministry. We're trying not to speak about issues directly linked to military action, because this is not our field of specialization. Thank you. Thank you very much. Mr. Sutkakar, please, PTI. Yeah, 1,000th day since the war erupted, exactly 1,000 days. So I want your response, not as a Kremlin spokesperson, but as a peace-loving Russian citizen. When do you think can you expect an early end to the war? I mentioned already, when it all started, it started against Kiev regime. And now it's continuing as a war between Russia and NATO countries. That's why it took a little bit longer, and it will take a little bit longer. I don't think it's possible to answer the question when can it end, when it can come to an end. But the only thing I can tell you, it will come to an end as soon as we reach our goals. We preferably want to reach our goals under and as a result of peaceful diplomatic negotiations. But you know that Kiev regime is denying a possibility of negotiations with Russia. And there was a special presidential decree by President Zelensky forbidding any president of Ukraine any negotiations with the Russians. Isn't it a problem? It is. So that's why we're continuing military operation, because a possibility of peaceful negotiations is now being denied, both by Kiev and their, the rulers in Washington. This is very sincere. Thank you, Mr. Peskov. Abhishek, That have just been announced by Kremlin? First of all, why it was necessary? It was necessary in order to adapt, to ensure an adaptation of our nuclear vision into realities of the modern day. What is the most striking example of the realities of the modern day? Authority in the White House in the United States takes a decision to use their weapon, American-produced weapons, against the Russian Federation. It's a striking example of new environment around our country. And it makes it necessary for us to ensure that the conception is updated. So we needed that update. We ensured it. This is number one. Number two. So just a second. I'll take a text. I have it on my working table. Yeah. Because this is the most important issue for today, and also it's of a great interest for our journalists here in Russia. So Russia actually was treating nuclear arms like a mean of deterring. So it's nuclear deterioration, and the usage of nuclear arms, is the last measure. Is the last measure that no one wants to undertake, actually. And Russia has always been a very responsible country in order to exclude such a threat of using of nuclear arms and to contribute in global peace and stability. So nuclear deterrence. Nuclear deterrence is aimed at ensuring the understanding by potential enemy of Russia of inevitability of nuclear answer should they try to make an aggression against Russia.
And also, there is another very important thing. Should a country attack our country, attack us by conventional weapons, but with the help and assistance by a nuclear state, we will treat it as a joint attack against our country with the relevant consequences. Those are very important messages. But if you take your time and have a look at Kremlin.ru website, Kremlin.ru, there is a full text in English. It's either already there or it will be there in, let's say, in 1 hour. So as soon as you are through with your conference, you will be able to read the full text. So, Mr. Peskov, thank you. I think one more last question. Yes. Right now, I will not be able to make any prediction. If he really stands for peace, and if he really prepared to extend efforts aimed at the settlement of the crisis, we will welcome that. And our president, I have no doubt, our president will welcome peaceful efforts. But we are pragmatic people. We don't wear pink glasses. And another 2 months we'll be facing very, very known by us administration of Mr. Biden in White House, who are trying to do their best to ensure that the war is continuing. So this is the reality that we're facing right now. Of course, we'll be hoping for the best. But at the same time, whatever happens, we're determined to reach our goals. So, but what do you think, sir? What made President Zelensky make that statement? I mean, how is he so confident that when Trump takes over, he'll be able to solve this? Well, I don't know. He is said to have had a telephone conversation with President Trump. We don't know. Maybe they discussed something in concrete, but we know nothing about it. Maybe Musk has a solution. Musk, you think? Well, I don't know. Who knows? You know, he's very good in technology. He's one of the best in the world, but I've never heard about his diplomatic capabilities. We'll see. Yeah. Mr. Peskov, we are very grateful to you, really very grateful. Sorry, I can't refuse. NDTV, Mr. Atan Karvach, please. Sorry, one more question. NDTV. What your first reaction? We have just got information that the missiles which are authorized by the Biden administration have actually been used. Yes, yes. Could you repeat that, please? Yeah, we have just got information that the missiles which have been authorized by the Biden administration have actually been used. Do you have any first-hand information on this? What is your reaction? I don't have this information, but I have no doubt that our military guys, they're keeping the situation under control. And as soon as we have this information, we'll evaluate the possible response. And how does Russia plan to repel or counter this? You must have really taken the strategic, impact that it can have on Russia. In fact, you on record say that it may lead to a further escalation of the war, Third World War as it were. So where do you see this going? Well, you know, it's a great mistake to think that any type of missiles can help Ukraine against Russia. So we have uncomparable military potentials, uncomparable Do you plan with to Ukraine. repel in what measure? In a due measure that is counted a due measure by our commander-in-chief and our president and our military leadership. Okay.
Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. Peskov. Just hold on a minute. Mr. Kiselov just wants to tell Юрий you a Сергеевич, few... огромное спасибо за ваш вклад в наше событие. Но я думаю, что все теперь понимают, что у нас не только лучший в мире президент, но и Answer your questions and to have a possibility of saying a couple of words to you. It's a very, very, very good and useful beginning by RIA Novosti to arrange this meeting. I hope it will not be a one case happening, but it will become a tradition. It will become a tradition, and you will be able to create a mechanism of dialogue of media to media. Thank you all once again. I hope that was not boring for you. I'm sorry for taking plenty of your time. And so I will be ready to join you next time if you invite us. Thank you. So thank you very much. Thank you. Thank you. Goodbye. No one. And America shouldn't do it. That is our understanding of multipolar world. Regional countries are supposed to solve their regional problems regionally, not globally, without global interference. And they have to be totally free from anyone's influence. So we will never do it. We will continue to develop our relationship, both with India and with China. And well, actually, a couple of weeks ago in Kazan, President Putin had a privilege of welcoming his two good friends, Prime Minister Modi and President Xi. He had very fruitful negotiations with both of them. It was very, very important and very, very pragmatic bilateral meetings. And without any influence from anyone, Prime Minister Modi and President Xi had their own bilateral meeting, free of any influence from outside. This is what we call multilateral, multipolar world. Thank you. Yeah. So I Just a think follow-up question, Olga, just a follow-up question on this Ukraine. And especially when those efforts are coming from our great friends like India. In that sense, President Putin do value efforts that are being done by Prime Minister Modi, and he is really thankful to Prime Minister Modi. And then Russia is open for any initiative that will be able to contribute in settlement. so Gazala Wahab. Union of the countries that share the same values vis-à-vis international order and vis-à-vis international relationship. Because BRICS does not have any signs of fixed organization. BRICS does not have a charter, for example. Does not have any common documents that organizes the structure of any secretariat or permanent organs. So it is based on a more concrete, more important, I think, element. Is a unity of vision of the nature of international relationship, and the countries that think that taking part in this union will correspond with their national interest, they do it, and they take advantage of that. Every country is trying to take advantage for its own sake, for its own national interests. Besides, of course, every country has a sovereign right to maintain relationship with other organizations in other directions and with third countries. It's untakeable part of every country. Listen, we have no doubt that India respects Russia and India values cooperation with Russia. But at the same time, we understand pretty well that India is a sovereign country. There's quite a few countries in this world that can afford to be sovereign, actually.
India is a sovereign country. So India is searching for benefits in every possible direction, and we understand that. And we understand that Russia is not the only partner of India. And at the same time, India is not the only partner for Russia. We have lots of other countries that we have a relationship with, and so on and so forth. So, but we have, at the same time, we have a joint ground. We have a joint ground in some understanding, in understanding of BRICS, the nature of BRICS, and we will continue doing that. Yes, there are certain countries that have problems between them, and they are sitting on the same table of BRICS summits. And we hope this will continue in future. At the end, atmosphere of BRICS, atmosphere of mutual understanding and mutual respect will contribute in settlement of the problems of those countries participating. It's very important. It's very important in our understanding, and we do find a potential future of BRICS very, very bright. And the best proof of that is a great interest of lots and lots of tens and tens of countries that are addressing BRICS with a request to be a part of the process. So yes, right now we are a little bit far away from a possibility of making any joint free trade agreements. But Russia is a part of different integration processes on this face of an ex-Soviet Union. So we have our Eurasian Economic Cooperation Organization and so on and so forth. So it's a multipolar world that we are looking at. And these are the signs of multipolar world. Every country is sovereign. Every country is doing what is more beneficial for it, that is more advantageous for it. And every country is to make friendship and to cooperate with those whom they presume to be necessary for them, not by fulfilling the order of a third country. I will openly name it, to fulfilling the order of the United States. Well, you know that, for example, yes, we are increasing our cooperation in various fields, and we know pretty well, and we understand it, that India is facing unprecedented pressure, unprecedented, sometimes unpardonable pressure, coming from the United States. The United States are trying to dictate to Indian banks what to do and what not to do. Isn't it an attempt to introduce a new colonial system or not? You tell me. We think it is. We think it is. And but jointly, I have no doubt we will get rid of those unpardonable pressure attempts. Thank you. We have Quenai, Nadine Kapoor, ANI. Hello, sir. Naveen Kapoor from ANI. Sir, you partially answered my question, which I'll be asking. Sir, is there any initiative separately going on between India, Russia, and Ukraine? Like, are you accepting India's mediation in this? Can you give me some more clarity? And secondly, I just want to ask, is Russia playing any role in easing the tensions between India and China? Because just ahead of the Kazan meeting, we saw some kind of a closeness building up between India and China. Starting from the end of your question, I repeat, we are glad that two leaders, leader of India and leader of China, had a possibility to use a soil of Kazan city of Russia to have their bilateral meeting. And there was really good news for everyone in the world. But again, it was a bilateral initiative by India and China, without any interference coming from abroad, from us. So we were just organizers of that summit, and we were trying to ensure that our dear guests like India and China are enjoying the best possible infrastructure and environment. So, and I hope that our guests were satisfied. Besides that, we don't have any role. But of course, being a friend of New Delhi and a friend of Beijing,
We are ready to contribute in every possible and every demanded way to normalizations between relationship between our two friends. Yes, and so about possible mediation between Mr. Modi between Russia and Ukraine. So we don't have any specific plan, any concrete plan. I mean, from A to Z on the agenda, on the table of negotiations. But we know that Mr. Modi is, well, of course, he's got a very, very special, very pragmatic relationship with our President Putin, and that he's also, he maintains contacts with the Ukrainian side. So at least he's able to receive information from first hands. From first hands, it's very important. It's very important, and thus it gives Prime Minister Modi the possibility to evaluate situation objectively, not under a informational or propaganda pressure coming from outside. Thank you. Well, I hope I hope soon we'll work out the precise dates of his visit. But you know that our leaders are exchanging visits. So, and of course, after 2 visits of Prime Minister Modi to Russia, now we have a visit of President Putin to India. So we're looking forward for it. We'll start very precise preparations for the visit. We attach a very great importance to this context. Right now, I don't have any specific dates. Thank you. Mr. Rishabh Gulati. President's office are part of a spokesperson's press pool that can speak English. How do we go about interacting with them? How can we actually get interviews on subjects as required in the Indian press? It's a very good question. Thank you for that. Well, actually, you know, there's a great problem. We don't have any single Indian journalist accredited in Moscow, working in Moscow. I have tons of journalists from the United States, from France, from Great Britain. They're calling my office 10 times a day. They're asking questions 10 times a day, every day, day and night. They're trying to confirm, to reconfirm various information and all that stuff. But we are in a permanent contact with them, because this is our job. We are at their service. And we'll be glad if we will be at your service, because this is our job. So my office, everyone speaks English. Office of my colleague in the Foreign Ministry, everyone speaks English there. And of course, we'll be welcoming. We'll be very glad to receive questions, to receive calls from our Indian friends. Especially using, for example, your dialogue with RIA Novosti. And RIA Novosti, I have no doubt, will be able to facilitate your contacts with Russian counterparts. Thank you, Mr. Peskov. Suhasini, Well, there are some problems still on the agenda in terms of economic cooperation, and to great extent, there's difficulties. Those problems are interconnected with the pressure coming from the United States, the pressure over India, from Indian authorities. We understand that of course, in a current economic system, global, it is very hard to withstand this pressure. But nonetheless, we are ready to search together with our Indian friends ways to overcome this illegal pressure to the benefit of our companies, Indian companies and Russian companies. And we have no doubt that jointly we will be able to find a solution. This is number one. Number two, our military cooperation. Well, first of all, it's a good sign of a special character of our bilateral relations, because only countries that are quite close to each other in their bilateral relations can be in such a deep military interaction. Of course,
we're speaking about very, very sophisticated. Isopure Collagen. Collagen peptides that help support healthy joints, hair, skin, and nails. Isopure. Add less, do more. रैपिडो कैब्स का डबल गारंटी, लोएस्ट प्राइस कैब वरना डबल पैसे आपके, लोएस्ट प्राइस गारंटी। नमस्ते। नमस्कार। ANI के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में मतदान के लिए एक हफ्ते से कम समय है और कैंपेनिंग के लिए तो उससे भी कम समय है। आपको कितना विश्वास है कि महायुति की सरकार बनेगी? देखिए, मैं पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर चुका हूँ, लगातार घूम रहा हूँ और एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग मुझे दिखाई पड़ती है। और विशेष रूप से हमारी जो विमेन सेंट्रिक पॉलिसीज है उसके कारण महिला मतदाताओं में तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे नज़र आती है। पहले ये होता था कि हमारी सभाओं में 75% मेन और 25% विमेन, अभी 50% विमेन पार्टिसिपेशन सभाओं में भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है ये जो सारी पॉजिटिविटी है इसके कारण मैं ऐसा नहीं कहूँगा, आई ऑलवेज से कि एनी बैटल इज अ टफ बैटल, पर हमको एज है और हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। मोदी जी ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है वो ओबीसी समुदाय को बांटने की कोशिश कर रही है ताकि उनका वोट एकजुट ना हो, और अगर सरकार में आती है कांग्रेस पार्टी तो SC ST का रिजर्वेशन भी हटा देंगी। उन्होंने आज भी उनकी जो फाइनल रैली थी महाराष्ट्र की, वहां भी उन्होंने आज रात को यही कहा। देखिए, इसका इंडिकेशन तो राहुल जी ने अमेरिका में दे ही दिया। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी की गलती हो गई कि उनको ये पता नहीं था शायद कि मीडिया हर जगह फॉलो करता है। तो अमेरिका में जाकर उन्होंने जो बयानबाजी की संविधान की और विशेष रूप से रिजर्वेशन पर, तो एक प्रकार से उनकी जो मानसिकता है वो सामने आई। दूसरा, जिस प्रकार से वो जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही बात कही है। देखिए, महाराष्ट्र में ओबीसी में 350 जातियां हैं। ये 350 जातियां मिलकर ओबीसी समूह बनता है, तो एक प्रेशर ग्रुप है कि भाई ओबीसी का कल्याण करना है। अगर 350 जातियां अलग अलग हो जाए तो एक समूह नहीं रहेगा, इनका प्रेशर खत्म हो जाएगा। अगर हम मुस्लिम ST की बात करें तो 54 अलग अलग आदिवासी समुदाय का मिलकर ST प्रवर्ग बनता है। देयर आर 54 कास्ट और एंड सब कास्ट। अब इनको अगर अलग कर दे तो वो प्रेशर ग्रुप नहीं रहते। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है। जिस प्रकार से ये भारत जोड़ो नाम का जो एक समुदाय तैयार किया है, इस समुदाय की एक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो एनार्किस्ट लोग हैं, ये एनार्की फैलाना चाहते हैं। और ये लोग भारत जोड़ो नहीं है, भारत को समाजों में बांटो और उसके बाद भारत को तोड़ो। और वो तो कहते हैं कि आप तोड़ने की राजनीति करते हैं, बांटने की राजनीति करते हैं, क्योंकि जैसे योगी जी आए थे तो उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। ये इस तरह का नारा जब आप देते हैं, आपकी पार्टी देती है, तो आप काटने का काम करते हैं। देखिए, मैं तो योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं देखता। इस देश का इतिहास देखिए, जब जब ये देश जातियों में बटा, प्रांतों में बटा, समुदायों में बटा, तब तक ये देश गुलाम हुआ। देश भी कटा और व्यक्ति भी कटे, इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये इस देश का इतिहास रहा है। और मैं समझ नहीं पाता हूँ कि अगर कोई ये कहता है कि बांटिए मत और बटिए मत, तो इस पर ऑब्जेक्शन लेने की क्या बात है? क्योंकि जब मुसलमान समाज कहता है कि हमें एकजुट होना चाहिए तो उनको एंटी नेशनल का दर्जा दिया जाता है, उनको सेपरेटिस्ट कहा जाता है कि आप एक गुट बना रहे हैं, आप यू आर नॉट इंटीग्रेटिंग विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन जब हिंदू समुदाय कहता है तो उसे नेशनलिज्म का दर्जा दिया जाता है। देखिए, सवाल ये है कि आप अगर किसी पर्पस के लिए एक आ रहे हैं, आप एकजुट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोकसभा में हमने क्या देखा? लोकसभा में हमने देखा वोट जिहाद। लोकसभा में उनके धर्मस्थलों से बैनर लगाए गए, महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं दिया तो अल्लाह के साथ बेईमानी है, ऐसे वोट लगाए।
ऐसे बैनर लगाए गए। मैं तो तमाम सेक्युलरवादी जो अपने आप को मानते हैं उनको पूछता हूँ, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? कस्में दिलाई गई लोगों को, और पर्पस क्या है? डिफीट मोदी। पर आपकी पार्टी भी कहते हैं जो राम को लेके आए हम उन्हें ले आएंगे, तो गाना है। और क्या, देखिए, राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये कहने में कोई गलत नहीं, लेकिन इस प्रकार की बात करना, कई हमारी पार्टी ने मंदिरों में लोगों को जमा करके भगवान की कसम खाइए कि बीजेपी को वोट देंगे, नहीं देंगे तो राम के साथ बेईमानी होगी, ऐसा तो नहीं कहा, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज देखिए जिस प्रकार की परिस्थिति लोकसभा के बाद तैयार हुई, अब जो डर हमको था, ये वापिस महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने का की राजनीति कर रही है। मैं एक उदाहरण आपको कहना चाहता हूँ। किसके तलवे चाट रही है? मुस्लिम उलेमाओं के, क्योंकि मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। अभी उलेमा काउंसिल ने उनको समर्थन घोषित किया, 17 मांगे उन्होंने रखी थी, इन्होंने बकायदा पत्र दिया है कि 17 मांगे हम मंजूर करते हैं। मुझे उसमें आपत्ति नहीं है अगर कोई मांगे रखता है, कोई मंजूर। मांगे कौन सी है? मैं एक मांग आपको बताता हूँ उसमें से। एक मांग उसमें से है 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जो दंगे हुए, उन दंगों में जिन मुस्लिम समुदाय के लोगों पर केसेस हुई है, वो सारी केसेस खारिज की जाएगी, वापस ले ली जाएगी। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी राजनीति चल रही है? ये अगर इसके खिलाफ इस प्रकार से दंगइयों को साथ में लेकर कोई पार्टी लड़ना चाहती है और हम बटे रहे तो कटेंगे। तो आपने जब कहा कि जैसे ये मांग है, इसको लीगली लड़ सकते हैं ना, आपने धर्म युद्ध कहा कि अब इसको वोट जिहाद के का अगर सामना करना पड़ेगा तो धर्म युद्ध करना पड़ेगा। तो ये धर्म युद्ध जो है वो बांटने की धर्म युद्ध की संकल्पना हमारे यहाँ क्या है? धर्म युद्ध की संकल्पना ये है कि यतो धर्मा ततो जया, ये धर्म युद्ध है हमारे यहाँ। जहाँ सत्य है वहां विजय है। ये असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको सत्य की लड़ाई इनके खिलाफ लड़नी पड़ेगी, ये धर्म युद्ध है हमारा। हमने ऐसा थोड़ी कहा हिंदू धर्म युद्ध लड़ो, हमने कहा धर्म युद्ध लड़ना पड़ेगा। और 8 दिन का चुनाव, और कौन कोर्ट जाएगा और कौन इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा वो तो बाद में होता रहेगा। ये लोगों ने तो समाज को बांट दिया, बांट के वोट तो लेकर चले गए। तो इसलिए देखिए, हम चुनाव जब लड़ते हैं तो ये लड़ाई है, भले शस्त्र नहीं है, अस्त्र नहीं है, पर यह लड़ाई है। सामने वाले बेईमानी करते रहे और हम देखते रहे, ऐसा नहीं होगा। हम जवाब देंगे, बेईमानी नहीं करेंगे लेकिन जवाब देंगे। आपने कहा अगर पत्थर आएगा तो ईंट का जवाब। हाँ बिल्कुल, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। देखिए, हम गांधी जी को बहुत मानते हैं, अहिंसा को भी बहुत मानते हैं, लेकिन ये तत्व हमको मंजूर नहीं है कि सामने वाले हमको मारते रहे और हम चुपचाप तमाशा देखते रहे। ऐसी अहिंसा हम नहीं मानते। सामने वाला ईंट मारेगा तो पत्थर से जवाब देंगे। पर उन्होंने कहा क्या, जैसे मैं ओवैसी का उदाहरण दे रही हूँ, जब वो यहाँ कैंपेन करने आते हैं तो आप कहते हैं कि वह रजाकार की बात आपने उठाई, आपने औरंगजेब की बात उठाई। पिछले इंटरव्यू में भी मैंने आपसे यही पूछा था कि औरंगजेब को बार बार चुनाव के दौरान क्यों घसीटा जाता है? हम नहीं लाते। ओवैसी की सभा में भाषण होता है और वो कहते हैं संभाजी नगर नाम कैसे दे दिया, संभाजी का क्या संबंध है। जब उनकी सभा में कहा जाता है कि ये धरती तो हमारे रजाकारों की धरती है, तो मुझे याद दिलाना पड़ता है रजाकारों की धरती नहीं है, ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की है, ये हमारे पुरखों की धरती है। रजाकारों ने तो इसके ऊपर कब्जा किया था और हमारे जो पुरखे या हमारी उस समय की जो पीढ़ियां है उनके ऊपर अत्याचार किए थे, अनाचार किए थे, दुराचार किए थे उनके साथ, ये याद दिलाना पड़ता है। देखिए, कोई अगर इस प्रकार की बात करेगा, अरे भाई छत्रपति संभाजी महाराज ने जो बलिदान दिया इतिहास में सब जानते हैं, हम क्यों छुपाना चाहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को दिनों दिनों तक, हफ्तों हफ्तों तक औरंगजेब ने तड़पा तड़पा कर मारा। वो कहते थे आप धर्म बदलो, छत्रपति संभाजी महाराज ने धर्म बदलना कबूल नहीं किया, वो शहीद हो गए। ये संभाजी नगर है। आप आकर अगर कहोगे कि हम संभाजी नगर को वापस औरंगाबाद बनाएंगे, कैसे बनाओगे? वो कहते हैं कि उनका बयान है
कि आप वो कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो है हमने जिहाद किया अंग्रेजों के खिलाफ और आपके पूर्वज जो है उन्होंने लव लेटर लिखे अंग्रेजों को। देखिए, पूर्वजों तक मत जाइए, उनको बता दीजिए अगर जाएंगे तो उनको शर्मिंदगी ही महसूस करनी पड़ेगी। और उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने खुद के लिए लड़ाई लड़ी है, देश के लिए नहीं लड़ी। देश को बांटने वाले लोग हैं। देखिए, मैं कोई उनको कोई सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहा, उनके खिलाफ भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर इतिहास में जाएंगे ना तो शर्मिंदगी महसूस करेंगे। वो तो ये भी कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी के लोग भी कह रहे हैं, सिर्फ ओवैसी नहीं, वो भी कह रहे हैं कि अयोध्या तक हार गए, धर्म युद्ध की क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, एक चुनाव के हारने और जीतने से फैसला थोड़ी होता है। अयोध्या एक इलेक्शन की सीट है, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, कई बार जीते कई बार हारे, इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब इसका ये होता है क्या कि अयोध्या में हम हारे तो अयोध्या के लोगों को राम मंदिर नहीं चाहिए ऐसा इसका अर्थ निकलता है? भारत के लोगों को राम मंदिर नहीं चाहिए इसका ऐसा अर्थ निकलता है? नहीं, आप आज भी पूछ लीजिए। क्योंकि राजनीति और धर्म को अलग रखना चाहते हैं लोग, लेकिन जो नेता हैं वो उसको जोड़ते जाते हैं, चाहे कास्ट हो चाहे रिलीजन हो। महाराष्ट्र में ये नहीं होता था, लेकिन महाराष्ट्र के इस चुनाव में जाति और धर्म को लेकर कोई भी गुरेज नहीं कर रहा। इतने बयान रोज रोज निकल रहे हैं। मैं वापस सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर उलेमाओं की मांग को लेटर देकर महाविकास आघाड़ी मंजूर करेगी और ऐसी मांगों को मंजूर करेगी तो हम कैसे चुप बैठेंगे? ये तो बात आई गई है। आप देखिए, कांग्रेस की इसी मानसिकता ने देश का बंटवारा किया है। अगर 1920 में कांग्रेस ये मंजूर नहीं करती कि वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा या आधा ही गाया जाएगा, ये तो बंटवारे का बीज वहां से उन्होंने रोपित कर दिया। जिस समय उन्होंने कह दिया जो वंदे मातरम देश के शहीदों ने, जो देश के क्रांतिकारियों ने जिस वंदे मातरम को राष्ट्रगान कहा, जो वंदे मातरम किसी मजहब का नहीं था, जो भी व्यक्ति, और अरे भाई अशफाकुल्ला भी वंदे मातरम बोलते थे, लेकिन हमारे देश के अंदर कुछ नेताओं ने केवल अपने स्वार्थ के लिए ये मांग की और कांग्रेस ने उस मांग को मंजूर कर दिया और कह दिया कि नहीं वंदे मातरम गाएंगे। आज प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच के दौरान कहा कि महाविकास अघाड़ी के एक नेता हैं, वो राहुल गांधी से, उन्होंने कहा शहजादे राहुल गांधी से कह के तो बताएं कि क्या वो हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे कहेंगे कि नहीं। एक बारी भी नहीं कहा उन्होंने। अगर वो कह सकते हैं तो ही विल बी ब्लेस्ड बाय बाल ठाकरे। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, उनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। और इतना ही नहीं, हमारे महाराष्ट्र में जो समृद्धि महामार्ग बना उसका नाम बाला साहब ठाकरे महामार्ग नहीं है, उसका नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महामार्ग है। हमारे यहाँ जो अस्पताल बने उसका नाम बाला साहब ठाकरे अस्पताल नहीं है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे हॉस्पिटल है। हमारे यहाँ जो गोरेवाड़ा का जू बना उसका नामकरण हुआ तो बाला साहब ठाकरे प्राणी संग्रहालय नहीं हुआ, हिंदू हृदय सम्राट। जब सरकार